Hi everyone, good evening and welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself Juhi Sharma, and here we are with another video for class 11 on the topic cost. So how you all are doing? Hello Mayank, hi. So guys, right now we are doing topic cost, okay? Now, what is cost? Cost is an important topic for class 11. And before you guys ask me, for class 11th, we do lives on every Wednesday at 9 p.m., right? And for class 12th, we do it on every Saturday at 10:30 a.m. So if your friends or your, near and dear ones are in class 12, you can, of course, refer this to them also. Now, we will starting with cost. Cost is a very easy topic. It is a very easy yet very, very important topic, right? So I would want to just let you guys know that if you like this video, just give it a thumbs up, give it a big thumbs up so that it motivates all of us to, hi Sam, it motivates all of us to go live every week, right? Subscribe to PRATHAM Test Prep's channel if you haven't done already, because trust me, we do a lot of lives, a lot of updates, and a lot of videos for you all, right? So we will be doing a topic cost. Now, cost is a very easy topic, as I've already mentioned. What is cost? Cost is किसी भी चीज को बनाने में whatever is required in producing any commodity, है ना? उसका क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि that is the cost of it. So if we have to go by definition, what is cost? Cost is actually the amount of money spent on producing any X quantity of a commodity, right? What is cost? Cost actually refers to the total amount of money which is spent by a company, by a firm, by a business model on producing any given amount of commodities. For example, if any company is manufacturing refrigerators, right? तो वो उसका cost क्या रखेगा? Cost उसका रखा जाएगा what everything is included in it. उस रेफ्रिजरेटर को बनाने में जो भी आपका टाइम, जो भी आपका पैसा लगा है, जितना भी मनी स्पेंड हुआ है, उन सबको ऐड करके आपका टोटल कॉस्ट निकाला जाएगा, राइट? नाउ माय थिंग इज कि टोटल कॉस्ट में क्या केवल जो फिक्स्ड कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, वही इंक्लूड होते हैं? हेलो कृष्णा, कॉस्ट जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वही होते हैं? The answer is no, because there are some type of variable costs too. So what is total cost? Total cost is actually sum of total fixed cost and total variable cost, right? So what is cost? It is the amount, the total amount of money which is spent by a company, by a business firm on producing a given quantity of a commodity. Now this total cost, it includes the fixed cost too and variable cost. आपकी fixed and variable cost दोनों ही इसमें included होता है, right? Now, in this total cost, there is another thing which is known as, अभी total cost जो MRP जो रखा होगा, उसमें आपका क्या होगा? उसमें business house का profit भी होगा. For sure, there will be some sort of profit too. What is that profit? That is actually known as the normal profit, right? That is actually known as the normal profit. That is the bare minimum amount which a producer keeps or which a producer includes in the total cost in order to keep in what? In order to be in the business, right? Akshat, just hold on for a minute, beta. I'll explain both the type of costs, implicit and explicit. दोनों costs मैं आपको बताऊंगी. These are a type of economic cost. Just hold on for a second, right? So what is normal profit? Normal profit is actually a bare minimum thing which a producer keeps, right? Total cost में वो add करता है so that he can run the business, so that he can be in a business, and this can also be said as entrepreneur's wage, right? ये जो business owner है, entrepreneur है, उसका wage भी आप कह सकते हो, okay? As I've already told you, what is total cost? Total cost is total fixed cost plus total variable cost. मतलब फिक्स्ड एसेट्स का भी जो कॉस्ट लगा है, जिसमें वेरिएबल फैक्टर्स भी आपके हैं, दोनों को मिलाकर जो भी है, दैट इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. जिसको आप कैसे निकाल सकते हो? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी. मतलब जो एवरेज कॉस्ट है और जितनी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी बनी है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, राइट? मूविंग फर्दर, व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? अब ये फिक्स्ड का क्या मतलब है? फिक्स्ड का मतलब यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, ओके? जो आपके फिक्स्ड एसेट्स है
उनका कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल लैंड है तो लैंड का रेंट, राइट। बिल्डिंग है जिसमें आपने कंपनी लगा रखी है, राइट, उसका रेंट। ओके, आपने कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ लाइसेंस फॉर दैट, लाइसेंस की फीस आपकी हो गई, राइट। जो कैपिटल जो आप यूज कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल। तो जो फिक्स्ड एसेट्स का जो कॉस्ट होता है, जैसे कि आपका रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लेबरर्स की वेजेस हो गई, यू कैन से, राइट। ऑल्दो अगर लेबरर्स ऊपर नीचे होते हैं, सो यू कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू। लेकिन जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, लाइसेंस फीस, ये सारा क्या है, दीज आर अ part of fixed cost. Why? Because these are fixed assets. So if in exams they ask you what is known as a supplementary cost, so total fixed cost is also known as supplementary cost, right? जितने भी fixed inputs हैं, जितने भी fixed assets हैं, उनका जो cost है, that is known as what? That is known as total fixed cost. Okay? जो भी आपकी total cost है, जो भी आपकी MRP है, उसमें से अगर आप variable cost का निकाल दोगे, क्या बचेगा? You will get total fixed cost. Why? Because total cost is equals to TFC plus TBC. Variable cost और fixed cost को ऐड करके total cost मिलेगा, and वहीं से हम कैसे निकाल सकते हैं? Total fixed cost is equals to total cost minus total variable cost. Simple है। उसके बाद if you are given the average fixed cost, और अगर आपको क्वांटिटी दे रखी है कि एक पर्टिकुलर एक्स क्वांटिटी का एवरेज फिक्स कॉस्ट इतना है पर क्वांटिटी, उससे को मल्टीप्लाई करके यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द टोटल फिक्स कॉस्ट टू। So what is total fixed cost? It is the cost of fixed assets, fixed inputs, and it is also known as the supplementary cost. जैसे rent हो गया आपका, interest हो गया, license fees हो गया, ये सारी क्या है? These all are the fixed cost. Okay. Now moving further, we have इकोनॉमिक कॉस्ट। जैसे कि अभी अक्षत ने पूछा था ना, व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, उसी तरीके की एक और कॉस्ट होती है, द ऑपोजिट ऑफ इट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट व्हिच एक्चुअली मेक द इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट। एक टर्म आपने देखा होगा इकोनॉमिक कॉस्ट, एंड ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, इट इज एक्चुअली द सम ऑफ सिंप्लिसिट एंड implicit cost. Explicit और implicit cost का जो sum है, that is actually known as the economic cost, right? Now let's see what is this explicit cost. ये explicit cost क्या हो गया? ये वो cost है, for example, जो आपका let's say wage का जो payment होता है, that is an explicit cost, right? जितना भी raw material आप purchase करते हो, right? That is an explicit cost. राइट, जितना भी आप रेंट देते हो वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, व्हिच इज लाइक इंक्लूडेड। ओके, जो चीजें आपकी कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, या तो वो बाहर से खरीद रहा है या फिर उसको हायर कर रहा है किसी भी चीज को फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, कोई भी फैक्टर अगर हायर्ड है, रेंट पर है या फिर परचेज किया हुआ है, ऑल दीज थिंग्स विल गेट इंक्लूडेड इन दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। ये वो कॉस्ट है जिसको आप पूरा का पूरा अकाउंट्स में डालते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू अगेन, जैसे इफ यू आर हायरिंग समथिंग, इफ यू हैव टेकन एनीथिंग ऑन रेंट, इफ यू एज अ बिजनेस हाउस यू हैव परचेज्ड एनीथिंग, दैट ऑल इंक्लूड्स इन द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। रॉ मटेरियल हो गया, रेंट हो गया, लेबरर्स का वेज हो गया, मटेरियल परचेजेस हो गया, ये सारे क्या है? दीज आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, so what is explicit cost? It is the actual money which a firm spends either on hiring or on purchasing of factors of inputs for the production, right? ये सारे क्या है? All these are the explicit cost. Example, wage, rent, interest payments, material purchases, ये सारे आपके explicit costs हैं, right? Now second type of cost which makes the economic cost is the implicit cost. ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? ये आपका होता है बेसिकली सेल्फ ओन्ड गुड, सेल्फ ओन्ड प्रोडक्शन के रिसोर्सेज जो आपके होते हैं, दैट इज एक्चुअली द इम्प्लिसिट कॉस्ट। नाउ जरा सोचो इस बारे में, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, right, and if you want to run a business, if you are running any sort of business and आपको उस business के लिए कोई plant लगाना है and you have your own land so that आप उस particular land पर plant लगा सको ना, थोड़ा सा सोच के देखो, will you be taking rent for that particular land? Obviously not, वो तो आपका खुद का land है, that is your
सेल्फ ओन्ड लैंड, राइट? तो क्या वो आप लैंड का जो रेंट है आप अपने बिजनेस के जो अकाउंट बुक्स हैं उसमें आप इंक्लूड करोगे? The answer is of course not, right? So ऐसे वाली जो आपकी कॉस्ट होती है जो सेल्फ ओन्ड होते हैं, राइट, जो प्रोड्यूसर के, जो बिजनेसमैन के सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं, वो यूज होते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. दैट इज एक्चुअली that things, those resources, the cost of those resources are included in the implicit cost, right? So what is implicit cost? It is actually the cost of self-owned production resources which is used in the manufacturing or the production process. Okay, again I'm explaining this to you. For example, if you have a piece of land and you want to run a business on that particular piece of land, will you be giving rent or will you be maintaining the rent also in the accounts book? The answer is no. Why? Because that is your land, that is your self-owned land which is being used in the production process, right, in the manufacturing process. So definitely you would not be charging rent for that, and that will include in the implicit cost, right? जो सेल्फ ओन्ड है और जो आप बाहर से परचेज कर रहे हो, हायर कर रहे हो, that will get included in the explicit cost. So economic cost आपकी दो चीजों से मिलकर बनी है, implicit cost and explicit cost, right? Now अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ व्हाट? द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड इनपुट्स slash factors of production, right? Fixed input slash factors of production का जो भी cost लगता है, that is what total fixed cost is. और total fixed cost को क्या बोलते हैं? It is also known as TFC. कैसे निकालोगे TFC? Just told you TFC is equals to total cost minus total variable cost. That is the formula of total fixed cost, right? So there are few features of total fixed cost. जो पहला feature है वो क्या है कि total fixed cost हमेशा और हमेशा आपकी constant रहती है at all output levels, right? जो total fixed cost है, it always remains constant at all output levels, right? Even if अगर आपका zero output है उस टाइम पर भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कुछ ना कुछ रहेगी. इट विल नेवर एवर बी जीरो. सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज सोच के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ भी चीज प्रोड्यूस करो, सो इवन इफ यू आर प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ अ कमोडिटी और इवन इफ यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग, आप कुछ भी आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, आप x यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप जीरो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, द आउटपुट इज जीरो. बट माई पॉइंट इज आपने वो बिजनेस जिस लैंड पर लगाया होगा, राइट, उसका आपको रेंट देना पड़ेगा. अगर आपने एक भी लेबर उस दिन आया है, यू हैव टू गिव द सैलरी टू दैट, राइट. कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको जाना है. सो ये चाहे क्या है, इवन इफ द आउटपुट इज जीरो, इट इज एट जीरो लेवल, लेकिन आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट जीरो, नेवर एवर, राइट. इसीलिए आपका जो TFC कर्व है वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रहता है. द TFC कर्व इज व्हाट? इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस. व्हाई? बिकॉज़ इट कैन नेवर बी जीरो. ठीक है, आउटपुट कैन बी जीरो बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो रहेगी, जीरो तो वो कभी नहीं होगा, राइट. नाउ आपका क्या है, सेकेंड थिंग व्हिच आई हैव टोल्ड यू, दैट टोटल कॉस्ट एट द जीरो आउटपुट लेवल इक्वल्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. As in, अगर जीरो भी आउटपुट निकल रहा है उस केस में टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट व्हाट? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. These are the two features of total fixed cost, right? Now I have told you total fixed cost होता है और दूसरा होता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट. व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट? ये वो आपकी कॉस्ट होती है जो आपके अलग वाले एक्सपेंसेस होते हैं. ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के होते हैं, राइट. वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. नाउ ये जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है ये आपका वेरी कर सकता है. अगर आपका आउटपुट जीरो है उस टाइम पर आपका वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट होगा. अगर आपके ज्यादा आउटपुट हो रहा है, ज्यादा क्वांटिटीज ऑफ कुछ हो रहा है, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट विल गो ऑब्वियसली हायर, राइट. लेकिन अगर आपका जीरो आउटपुट लेवल होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन
zero. Why? Because it's a variable cost, it is not a fixed cost. And this is the reason why जो आपका TBC का curve होता है, that is always perpendicular to the total cost curve. क्यों? क्योंकि this variable cost, it actually varies with the output. If the output is zero, output आपका zero हुआ, उस केस में क्या होगा, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो बी जीरो, बट फिक्स कॉस्ट क्या आपका जीरो रहेगा? नो, द आंसर इज नो, टोटल फिक्स कॉस्ट विल नेवर बी जीरो, राइट? सो ये हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट. एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ऑफ कोर्स जब आप टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे, यू विल गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट. व्हाई? बिकॉज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. Total variable cost कितना हुआ? Total cost minus total fixed cost. Simple, right? So that is what total variable cost is all about. Now let's quickly see the features of it. However, अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका आउटपुट जीरो रहता है, उस केस में आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज बी जीरो, राइट? हाय अक्षर. सेकंड क्या है आपका? सेकंड फीचर इज जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, as I've just told you, how the output will rise, likewise total variable cost will also rise. जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, उसी तरीके से आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपका इंक्रीज करेगा, राइट? और अगर आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? इट विल बी जीरो, राइट? एंड द थर्ड फीचर इज कि इनिशियली तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बड़ा होगा, लेकिन इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? व्हाट आई हैव टोल्ड यू? आई हैव टोल्ड यू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो वो हमने बताया था, उसमें क्या था? उसमें मैंने क्या बताया था कि पहले तो इंक्रीज होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट विल डेफिनेटली गो डाउन, राइट? वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देने लगता है. इंक्रीज तो होता है, बट ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स इट ग्रोज एट एन इंक्रीजिंग रेट. लेकिन हमेशा जो है वो आपका इंक्रीजिंग रेट पे ग्रो नहीं करेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट, दैट इज टीबीसी. कि बढ़ेगा तो, बट इट विल नॉट बी ऑलवेज कि बढ़ता ही बढ़ता चला जा रहा है. इट विल ग्रो बट एट अ डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रेट, right? So that is the third feature, that initially TVC will grow at an increasing rate, but later on it will grow at diminishing returns at diminishing rate. Akshay, could you please be specific, bacha? You want to join which course? Could you please be a little specific, right? So that is what about TVC, that is total variable cost and total fixed cost, right? ये चीज आपकी clear हो गई. Now moving further, उसके बाद the next thing which you need to know is average cost. जो हम starting में आपको पढ़ा रहे थे कि अगर आपको average cost पता है, अगर आपको average cost पता है, अगर आपको quantity पता है, right? So definitely you can calculate what? You can calculate total cost, right? तो अब ये average cost क्या है? Average cost is basically वो cost जो एक यूनिट ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में बनता है, राइट? योर कोर्सेज फॉर एंट्रेंसेस. ओके अक्षर, अक्षर आर यू नॉट अ प्रथम स्टूडेंट? आर यू नॉट अ प्रथम स्टूडेंट अक्षर? Akshat, are you not a Pratham student? Please do let me know. No? Okay. So Akshat, we have this number, the students helpline number. You can give us a call and definitely you will be able to join us, right? You'll be able to join us, or if there's any other way wherein we can reach you, we can enroll you, right? Tell us some any other way if you have. You can, if you want, you can share your number, we can reach out to you, but this is the student helpline number. You can contact on that, okay? For any entrance, for any management, law, hotel management, or any other entrances, you can contact for that, right? So we have average cost, as I was telling you. Average cost kya hai? Average cost is basically the sum, right? Okay, just understand in this way, कि आपको एक यूनिट ऑफ कमोडिटी बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, राइट? एक यूनिट ऑफ कमोडिटी बनाने में आपको जितना कॉस्ट लगेगा वो क्या है? दैट इज एक्चुअली द एवरेज कॉस्ट, राइट? अब क्या होगा आपका एवरेज कॉस्ट? क्या होगा? एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये चीज समझ आई?
ये चीज समझे कि एवरेज कॉस्ट क्या है, इट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सो ये आपका एवरेज कॉस्ट है। और किसी भी चीज का एवरेज बनाने के लिए कैसे पता चलता है, अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है किसी भी कमोडिटी का, लेट्स से अगर आपको एक आईपैड के मैन्युफैक्चरिंग का एवरेज कॉस्ट चाहिए तो कैसे निकलेगा कि एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द एवरेज कॉस्ट, राइट। और क्या है उसका, average fixed cost plus average variable cost का summation is the average cost. Okay, thank you so much Akshat. Now average fixed cost के लिए there are few formulas, जैसे आपका average cost is equals to total cost upon quantity. average cost का दूसरा फॉर्मूला क्या है, ABC plus ABC, जो मैंने आपको अभी इधर बताया। average fixed cost कैसे निकालोगे, total fixed cost upon quantity, of course जितना भी total आपके products बने हैं उसको नंबर ऑफ उससे डिवाइड कर दो, यू विल गेट इट, एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो आते हैं फीचर्स ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फीचर्स क्या है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के, नंबर वन, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है, राइट, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, it will continue to decrease. Why? Because output आपका बढ़ रहा है, total number of quantities आपकी बढ़ रही है, लेकिन जो fixed cost है क्या वो भी बढ़ेगा? No, the average fixed cost will actually decrease, right? Second जो feature है वो क्या है, that the graph का shape क्या होता है of average fixed cost is rectangular hyperbola. What is rectangular hyperbola? Rectangular hyperbola is this kind of shape, राइट, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। जब आप ऐसी कुछ शेप देखते हो, दिस शेप इज नोन एज व्हाट, दिस शेप इज नोन एज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये आपकी शेप है। एंड थर्ड जो फीचर है वो क्या है, the third feature is that the graph of average fixed cost, it cannot touch or cross x or y axis. आप इधर देखो, is this touching, is this graph touching x axis or y axis? The answer is no. So this is what average cost is all about, and average fixed cost के सारे क्या है, ये सारे हैं आपके features, right? Now moving further, on the next slide we have average variable cost. अब आपको ये याद रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है, बट जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है आपका, बेसिकली कि ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है जो यूज हो रहा है इन मेकिंग वन यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक यूनिट ऑफ कमोडिटी को बनाने के लिए जो आपका वेरिएबल कॉस्ट यूज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट किसका होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा ऑब्वियसली द वेरिएबल आउटपुट्स, वेरिएबल इनपुट्स जो भी आपके यूज हो रहे हैं इन प्रोड्यूसिंग द commodities, in manufacturing the commodities. So that is what average variable cost is, right? And the formula for average variable cost is, of course, variable cost का formula है average variable cost total variable cost upon quantity. Simple. अगर आपका average variable cost का पूछा है तो आपको वैसे करना है, normal, right? Now you need to know the next thing, that average variable cost का जो graph होता है that is U shape. It is not rectangular hyperbola as you can see in this particular graph. This is actually the graph of average variable cost. Hyperbola is this, and ये जो है आपका this is a U shape, right? So ABC का shape है is always U shape. AFC का जो shape है is in the shape of rectangular hyperbola. So you need to use these particular terms in the paper in order to avoid confusion. Okay? Now moving further, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी, उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो हम क्या पढ़ते हैं, द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी स्टडी इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, जैसे जैसे an additional unit of commodity is being produced, how the total cost is changing, right? What it refers to? It refers to the change in total cost, delta TC, right? As the result of production of an additional unit of commodity, right? जैसे जैसे additional unit of commodity जो है वो आपका बढ़ रहा है, एक और नया unit of commodity manufacture हो रहा है, produce हो रहा है, उसके साथ साथ total cost में क्या change आ रहा है, कितना change आ रहा है in the total cost is known as marginal cost,
right? That is delta TC. It refers to the change in total cost with result to the production of an average unit or additional unit of a commodity. अब सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, अगर जैसे जैसे आपकी चेंज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? इट रेफर्स टू चेंज. Formula will be delta TC upon delta Q. What is this Q? This Q is the output or quantity, right? And TC is what? TC is the change in total cost. ठीक है? So this is the formula for calculating marginal cost, right? So again, अगर आपको total variable cost से निकालना है तो कैसे निकलेगा? Total variable cost upon delta Q. Change in that. And this is the shape of what? This is the shape of marginal cost. Marginal cost का जो curve का shape है वो ऐसा होता है, right? Now questions exam में आपके कैसे आ सकते हैं? They can ask you that what is the relationship between MC and ABC. What is MC? MC is the marginal cost, right? What is ABC? ABC is what? ABC is the average variable cost, right? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि भाई MC और ABC के बीच में रिलेशनशिप क्या है. So there are three things जब आप explain कर सकते हो to explain the relationship between MC and ABC. Number one, जब आपका MC great आपका लेस होगा देन ABC, तीन कंडीशंस हो सकती हैं. या तो आपका MC बराबर होगा ABC के, MC is equals to ABC, कंडीशन नंबर वन. या तो आपका MC ग्रेटर देन होगा ABC के, कंडीशन नंबर टू. And the third condition that can be that MC is less than ABC. यही तीन conditions हो सकती है, इससे ज्यादा तो कोई condition हो नहीं सकती to explain the relationship between MC and ABC, that is marginal cost and average variable cost. These are the three possible conditions. Okay. So when MC is equals to ABC, जब marginal cost average variable cost के equal होता है तब क्या होता है? तब ABC बिल्कुल लोएस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होता है और कांस्टेंट होता है. सो समझ लेना, whenever average variable cost is minimum and constant, in that particular scenario MC is equals to ABC, right? जब आपका ABC, जब तक ABC बड़ा होगा MC से, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल फॉल, राइट? आप ये देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ MC, दिस इज द ग्राफ ऑफ ABC, राइट? MC is greater than ABC, उस केस में क्या हो रहा है? ABC यहाँ से आपका गिर रहा है. MC जब ABC के इक्वल आएगा तो क्या है? ABC बिल्कुल मिनिमम है and it is constant. And third क्या है? जब आपका marginal cost is greater than average cost, उस केस में देखो आपका ABC बढ़ना शुरू हुआ, right? ABC is rising. लेकिन हमेशा आप ये याद रखना कि MC और ABC का ग्राफ जब कट होगा, this is MC, ये आपका MC कर्व है और ये आपका ABC कर्व है. सो ABC और MC हमेशा आपका कब इंटरसेक्ट होगा? व्हेन ABC इज एट द मिनिमम लेवल, ABC इज एट द लोएस्ट पॉइंट. जब आपका ABC लोएस्ट पॉइंट पर होगा, उसी केस में आपका MC और ABC विल इंटरसेक्ट, राइट? यू शेप होगा, लेकिन ABC के लोएस्ट पॉइंट पर ही MC जो है वो उसको इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा. दोनों ही आपका यू शेप बनाते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. हाय ध्रुव, right? So that is a relationship between MC and ABC. ठीक है? तीन कंडीशन, या तो MC ABC के इक्वल होगा, या MC ABC से बड़ा होगा, या MC ABC से छोटा होगा. अगर इक्वल होगा तो ABC मिनिमम है और कांस्टेंट रहेगा. अगर ABC बड़ा है तो ABC विल फॉल, मतलब उसका जो ग्राफ है वो फॉलिंग बनेगा. और अगर MC इज ग्रेटर देन ABC है तो क्या है? ABC राइज तो होगा बट इट विल इंटरसेक्ट MC जब वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल लोएस्ट होगी. And MC और ABC दोनों का कर्व क्या है? It has like a U-shaped curve. Okay, so this is what the relationship between marginal cost and average variable cost is all about. Okay, now quickly let's see the relationship between marginal cost and average cost. This is the last type of question या topic जो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई MC और average cost के बीच में क्या डिफरेंस है? Because average cost क्या है? Average cost is basically total cost upon quantity, right? जितनी total cost आपकी हो रही है, जितनी quantities बनी है, divide कर दो, you'll get the average cost. अब ये marginal cost क्या है? Marginal cost है आपका एक additional unit जब बन रही है तो how total cost is being changed? Delta TC upon delta Q. This is what marginal cost is. So how these two things are related? Understand it in this manner, right?
सो जब आपका AC कम होता है, AC फॉल होता है, सो अगेन ये भी आपका रिलेशनशिप है. देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस. ईदर MC will be equal to AC, that is situation number 1. Situation number 2 will be either MC will be less than AC, and situation number 3 will be MC will be greater than AC. इससे ज्यादा कोई और तो आपकी नहीं होगी सिचुएशन. These will be the 3 situations, right? तो जब आपका MC AC के इक्वल होता है, मतलब जो वो मार्जिनल कॉस्ट है जो एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी बनाने में लग रहा है, और वो जो एवरेज कॉस्ट है, जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट एंड मिनिमम, राइट? अगर आपका AC बढ़ रहा है तो समझ लो आपका क्या हो रहा है, MC is greater than AC. So whenever MC is greater than AC or whenever AC rises, marginal cost हमेशा greater है, and whenever average cost falls, marginal cost हमेशा. So that is what the relationship between MC and AC, that is marginal cost. Just for your reference, writing it down, marginal cost and average cost, right? You can even see the diagram over here. बिल्कुल आप diagram इधर देख सकते हो, MC, AGC, AVC, quantity of output, and these are the costs on the y-axis, right? So this is all what was there in today's session. I hope you guys enjoyed it, right? I hope you guys have revised the concept of cost for class 11. Okay? I can see a few of you are in 12th, but I guess you guys were revising the concepts so that आपका वो जो domain specific हो रहा है in CUCET वगैरह में, तो उसमें आपको clarity मिल सके. I guess that's the reason why you guys are here, because some students I can recognize and I think they are in class 12, but it's okay. जहाँ से भी knowledge मिले हमेशा ले लेना चाहिए. So thank you so much guys for staying tuned, and if you like this video, give it a thumbs up. Hit that like button, subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't done already, because trust me, we upload a lot of informative videos, a very important content of current affairs, vocab and whatnot on this channel, right? So subscribe to Pratham Test Prep's channel. Good luck, stay tuned for whatever we come. Keep smiling, keep revising, keep preparing for your boards, entrances, whatever you have, right? Till then, take care, bye-bye, and I shall meet you super soon next week in my next video. Thank you so much, guys. Bye, good night.